In this lecture, I will talk about Elizabethan age. So we will talk Elizabethan period in detail. So what's the span of Elizabethan period? आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आते हैं. तो 1558 to 1603, this is a period of Elizabethan age. आपको पता होना चाहिए. ये क्वेश्चन आपके आते हैं कि कौन सा एज कौन से पीरियड में थी. So Elizabethan period, that is 1558 to 1603. Why is it called Elizabethan age? Because Elizabeth I had been the Queen of England during this period. इस पीरियड के दौरान जो इंग्लैंड की रानी थी वो एलिजाबेथ I थी. तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं यहाँ पर. And Elizabethan age is known by several names. इसको कई नेम से जाना जाता है. Elizabethan age is also known as the golden period of English literature. क्योंकि during this age, literature took its proper shape. Literature को proper shape मिली. वो किस में मिली? Elizabethan period में. Why? Because Elizabethan period was a period of peace. शांति का पीरियड था ये. ठीक है. There was no wars. इससे पहले वाले जो एज थी उसमें क्या थे? कॉन्टिन्यूअस वॉर्स वर गोइंग ऑन. लगातार युद्ध चल रहे थे. जैसे अगर आपको ध्यान हो 100 years वॉर. 100 years वॉर किस में चला था? बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस में. इट स्टार्टेड इन 1338 एंड इट कंटिन्यूड अप टू 1453. तो 100 years वॉर चले. उसके बाद इंग्लैंड में सिविल वॉर हुआ था. दैट इज नोन एज द वॉर ऑफ रोजेस. दैट स्टार्टेड 1455 टू 1485. वॉर ऑफ रोजेस चला था. तो एलिजाबेथन पीरियड से पहले वाला जो पीरियड था दैट वाज द पीरियड ऑफ यू कैन से दैट अनरेस्ट, अशांति वाला पीरियड था. लेकिन एलिजाबेथन पीरियड में क्या हुआ? देयर वाज पीस at England. इंग्लैंड में पीस थी. कोई ज्यादा युद्ध नहीं हुए. And that's why literature took its proper shape. Literature ने अपना शेप लिया. First comedy was written. First tragedy was written. Then there started poetry also. Poetry भी शुरू हुई. तो काफी नई चीजें हुई. इसलिए एलिजाबेथन पीरियड को हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं. तो एक तो इसका पीरियड याद रखना 1558 तो 1603. और ये जरूर याद रखना कि विच पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड दैट इज द एलिजाबेथन पीरियड. क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे राइटर इस पीरियड से बिलोंग करते थे. ठीक है. तो इसे हम एलिजाबेथन पीरियड क्यों कहते हैं? बिकॉज क्वीन एलिजाबेथ I had been the queen of England during this period and that's why this period is known as Elizabethan period. Now एलिजाबेथ के ट्यूटर का क्या नाम था? इसका ट्यूटर जो था रोजर एशम. ही वॉज हिमसेल्फ राइटर. रोजर जो एशम था वो अपने आप में एक राइटर था. रोजर एशम ही रोट 2 वर्क्स. इसके 2 वर्क्स बड़े पॉपुलर हैं रोजर एशम के. वन इज टॉक्सोफिलिक्स एंड द सेकंड इज द स्कूल मास्टर. सो हिज 2 वर्क्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, द स्कूल मास्टर एंड टॉक्सोफिलिक्स. तो ही वॉज एलिजाबेथ I ट्यूटर. तो ये एलिजाबेथ I का ट्यूटर था. और आपको पता होना चाहिए दैट एलिजाबेथ I शी डिडंट मैरी. इसने शादी नहीं की थी. तो शी रिमेन्ड अनमैरिड. दैट्स व्हाई शी इज आल्सो कॉल्ड अ वर्जिन क्वीन. इसको वर्जिन क्वीन भी कहते हैं बिकॉज शी डिडंट मैरी. ठीक है. तो इसके ट्यूटर का नाम आपको पता होना चाहिए. शी रिमेन्ड अनमैरिड. दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट. And King of Spain, whose name was Philip II, he sent 2 proposals to Elizabeth I. 2 marriage proposal भेजे एलिजाबेथ I को. But Elizabeth I, she rejected both proposals. दोनों proposals को क्या कर दिया उसने? Reject कर दिया. एलिजाबेथ I, she rejected both the proposal and that's why Philip II, who was the king of Spain, he got angry. ये angry हो गया and that's why Philip II attacked England. इंग्लैंड पर अटैक किया
किसने? फिलिप सेकंड ने, बाय सेंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स, बहुत ज्यादा शिप्स भेजी। लेकिन जो एलिजाबेथ वन थी, शी इनकरेज्ड हर सोल्जर्स, अपने सैनिकों का साहस बढ़ाया, ठीक है। और व्हाट हैपेंड दैट ए मिरेकल टुक प्लेस, क्या चमत्कार हुआ कि देयर केम अ टेम्पेस्ट, समुद्र में तूफान आ गया, एंड ऑल द शिप्स वर डिस्ट्रॉयड, जितनी भी शिप्स थी सारी वो डिस्ट्रॉय हो गई, एंड द स्पेन वाज डिफीटेड, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्पेनिश आर्मेडा, ठीक है। तो अटैक इंग्लैंड, फिलिप सेकंड ने इंग्लैंड पर अटैक किया। व्हाई? बिकॉज एलिजाबेथ वन शी रिजेक्टेड फिलिप सेकंड्स two proposals of marriage, and that's why Spain attacked England by sending a number of ships, and that battle is called the Battle of Spanish Armada, ये आपको याद रखना है। And when did it took place? In 1588, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 1588, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, 1588। So Spain was defeated, and then people, they started thinking Elizabeth I having some miracles, ये सोचने लगे कि इसके पास कोई चमत्कार जैसे हैं। तो दैट इज अ लिटिल बिट अबाउट एलिजाबेथ वन, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1558 to 1603, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। द बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मेडा बहुत इंपॉर्टेंट है 1558 में, ठीक है, उसका ट्यूटर, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक्चुअली एलिजाबेथन पीरियड इज आल्सो नोन एज इंग्लिश रिनाइंसा पीरियड, इसको इंग्लिश रिनाइंसा पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि जो एलिजाबेथन पीरियड है इट इज नोन बाय सेवरल नेम्स। एलिजाबेथन पीरियड, इट इज आल्सो नोन एज इंग्लिश रिनाइंसेंस पीरियड, तो इसे इंग्लिश रिनाइंसेंस पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि जो रिनाइंसेंस था, एक्चुअली दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन इटली, ये मूवमेंट इटली में शुरू हुआ था रिनाइंसेंस। बाय एंड बाय इट रीच्ड इंग्लैंड, ये इंग्लैंड पहुंचा, और ये इंग्लैंड कब पहुंचा? इन द 16th century, means during the Elizabethan period it properly reached England। तभी इसका पीरियड क्या है? रिनाइंसेंस पीरियड क्या है? 1500 to 1660, 1500 से लेकर 1660 तक का जो सारा पीरियड है उसे हम रिनाइंसेंस पीरियड कहते हैं। तो ये रिनाइंसेंस कब स्टार्ट हुआ? when there was fall of Constantinople। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल इज द नेम ऑफ ए सिटी इन रोम, और यहां पर सारे क्या रहते थे? स्कॉलर रहते थे। बट दिस सिटी वाज कैप्चर्ड बाय द, यू कैन से दैट, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर ने इस सिटी को कैप्चर कर लिया। तो जितने स्कॉलर्स थे ना, दे फ्लैग टू इटली, सारे इटली भाग गए, टेकिंग देयर मास्टरपीसेस, अपनी मास्टरपीसेस अपने साथ लेकर, एंड देन स्टार्टेड रिनेसेंस। तब रिनेसेंस शुरू हुआ। जो रिनेसेंस है ये इटली में शुरू हुआ था, ठीक है। इट स्टार्टेड इन इटली एंड इट रीच्ड इंग्लैंड इन द 16th century। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिनेसेंस था, इट रीच्ड फ्रांस, देन इट रीच्ड जर्मनी, and at last it reached England in the 16th century, ठीक है। तो ये था। and what is the meaning of renaissance? renaissance का मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग। रिनाइंसेंस में क्या हुआ? रिवाइवल हुआ, रीबर्थ हुआ। किसका रीबर्थ हुआ? एंशिएंट लर्निंग का। पीपल स्टार्टेड रीडिंग एंशिएंट बुक्स रिटन बाय रोमन पीपल्स, रिटन बाय ग्रीक जो लोग हैं, जैसे हम सोफोक्लिस की बुक्स पढ़ते हैं, एडिपस रेक्स, अरिस्टोटल की पोइटिक्स पढ़ते हैं, प्लेटो पढ़ते हैं, ठीक है। सो पीपल स्टार्टेड रीडिंग एंशिएंट लिटरेचर, दे स्टार्टेड फॉलोइंग एंशिएंट कल्चर, दैट वाज रिनेसेंस। इसे हम कहते हैं रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग। क्योंकि रिनेसेंस से पहले, बिल्कुल बिल्कुल, आई एम कमिंग देयर। तो रिनेसेंस इतना पॉपुलर क्यों हुआ? बिकॉज प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय विलियम कैक्सटन।
विलियम कैक्सटर ने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की इन 1476. आई एग्री विद यू अमनदीप. सो प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन 1476 बाय विलियम कैक्सटर. पहले जितना भी लिटरेचर था ना, इट वाज अवेलेबल इन मैन्युस्क्रिप्ट. लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई, so then the books were available, so many people were able to read the books at the same time. So people realized Renaissance से पहले क्या था, religion and king they were powerful. दोनों पावरफुल होते थे, धर्म बहुत पावरफुल होता था और किंग बहुत पावरफुल होता था. People they didn't have their importance, common people they didn't have their importance. But after Renaissance, when they read the ancient works, ancient literature, so people realized that they have their value. उन्हें पता चला कि हमारी value है. And that's why the people they started revolting. उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, revolting शुरू कर दिया, revolt शुरू कर दिया. कहाँ? Against religion and king. राजा के खिलाफ रिवोल्ट होने लगा, रिलीजन के खिलाफ रिवोल्ट होने लगा. अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको ध्यान हो तो रेफॉर्मेशन, ए मूवमेंट स्टार्टेड दैट इज नोन एज रेफॉर्मेशन. एक रेफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, एंड दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर. मार्टिन लूथर ने शुरू किया था इन जर्मनी इन 1517 में. मार्टिन लूथर स्टार्टेड ए मूवमेंट इन रिलीजन and that is known as Reformation, because Martin Luther he revolted against Roman Catholicism. क्योंकि Roman Catholicism क्या है? The oldest religion of Europe. यूरोप का जो सबसे पुराना धर्म है वो क्या है हमारा? Roman Catholicism है. And then there was corruption in Roman Catholicism. Roman Catholicism में corruption थी, and that's why he revolted against Roman Catholicism. And a new religion started, और जिस religion को क्या कहा जाता है? Protestantism. Protest word से बना Protestantism. ठीक है, तो ये एक नया धर्म शुरू हुआ, that is called, बिल्कुल ठीक है, that is known as Reformation also. ठीक है. Renaissance period को हम एक और नाम से भी जानते हैं. Renaissance period is also known as humanistic period. ठीक है, ह्यूमनिस्टिक पीरियड भी इसको कहते हैं. ह्यूमनिज्म इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस रिनेसेंस ने सबसे सेंट्रल इंपॉर्टेंस किसको दी? ह्यूमन को. ह्यूमन मैंने क्या होता है? मनुष्य. तो एक मूवमेंट शुरू हुआ दैट इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म. सो ह्यूमन वाज कंसीडर्ड द सेंटर. ठीक है, एंड बिल्कुल मनुष्य ने अपनी इंपॉर्टेंस ली. राजा के खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर दिया, रिलीजन के खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर दिया. अगर आप क्रिस्टोफर मार्लोव के प्ले देखो, डॉक्टर फॉस्टस में क्या होता है? इन डॉक्टर फॉस्टस द सेंट्रल कैरेक्टर डॉक्टर फॉस्टस है, ही रिवोल्ट्स अगेंस्ट रिलीजन. रिलीजन के खिलाफ रिवोल्ट करता है, एंड ही गोज फॉर नेक्रोमेंसी, ब्लैक मैजिक की तरफ जाता है. अगर आप उसका प्ले लिख लो एडवर्ड सेकंड, तो एडवर्ड सेकंड में क्या है? देयर वाज रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग and Edward II was murdered. ठीक है, तो रेनेसेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको दिया गया? ह्यूमन को. तभी एक मूवमेंट शुरू हुआ दैट वाज कॉल्ड ह्यूमनिज्म. ह्यूमन वाज कंसीडर्ड सेंट्रल. दे बिलीव्ड इन रीजन बिकॉज गॉड हैज गिवन अस रीजनिंग पावर. ठीक है, और रेनेसेंस पीरियड में क्या हुई? डिस्कवरीज. जो लोग थे दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग. उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू की, and the new countries were discovered. If you remember, India was discovered by Vasco da Gama in 1498, and America was discovered by Columbus in 1492. ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई. सेकेंडली और क्या था? रिनेसेंस के कारण क्या हुआ? साइंस स्टार्टेड, बिकॉज रिनेसेंस गिव्स वैल्यू टू ह्यूमन. Renaissance gives value to reason, and that's why science started. ठीक है, साइंस शुरू हुआ. क्योंकि पहले क्या था? पहले लोग क्या मानते थे कि जो सन है, सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. पहले ये मानते थे कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है. बट गैलीलियो, इफ यू रिमेंबर, बिल्कुल कॉपरनिकस, बिल्कुल ठीक है, ये कुछ साइंटिस्ट थे.
they found out that the sun doesn't revolve around the earth. What is the fact? That the earth revolves around the earth, sorry, the sun. The earth revolves around the sun. ठीक है, गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट की, तो बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई. तो रिनेसेंस जो पीरियड था, इट वाज द पीरियड ऑफ क्रिएशन. तो मैंने आपको बहुत सारा रिनेसेंस के बारे में बता दिया है. ठीक है, तो ये था रिवाइवल, रिवेकनिंग. ठीक है, तो पूरा इसका पीरियड है 1500 से लेकर 1660 तक. तो इसमें क्या क्या पीरियड आते हैं? एलिजाबेथन पीरियड आता है रिनेसेंस पीरियड में 1558 to 1603. Then there's a Jacobean period 1603 to 1625. I will deliver my complete lecture on Jacobean period पे. I will deliver my complete lecture. Then there is the Caroline period 1625 to 1649. I will deliver one lecture, complete lecture on Caroline period also. Then there's the Commonwealth period. This is also known as the period of interregnum. ठीक है, and that's the period is 1649 to 1660. So these are the periods of the Renaissance. ये पूरे 1500 से लेकर 1660 तक ऐसे पीरियड बटे हुए हैं. I will deliver my lecture on each and every period. One lecture on Jacobean period, one lecture on Caroline period, one lecture on Commonwealth period. ठीक है, or the period of interregnum. So that is Elizabeth period is also known as a Renaissance period. So I think you are able to understand this slide also. I have discussed the various aspects of Renaissance. I have discussed Reformation. I have discussed Protestantism. I have discussed humanism. I have discussed scientific temper. And Christopher Marlowe, he is called a true child of Renaissance because Christopher Marlowe, he represents Renaissance period in his plays. अपने plays में Renaissance period को दिखाता है. In his plays, he depicts desires for various emotions. Tamburlaine the Great, जो इसका first play है, in that play, Christopher Marlowe shows desire for power. इसका जो second play है, The Jew of Malta, he shows a desire for money. Third इसका जो play है, Dr. Faustus, in that play he shows desire for knowledge. Then there's the fourth part, that is Edward II. He shows a desire for lust. Okay? So he deals with these aspects. So I think you are able to understand that Renaissance period. Now come to the next, first tragedy. Now during this period, first tragedy was written. Okay? The first tragedy was written, and the name of the first tragedy is Gorboduc. Gorboduc is the first tragedy that was written during the Elizabethan period. So you must remember the first tragedy, Gorboduc. Gorboduc is the first English tragedy, and it was written by two writers, Thomas Sackville and Thomas Norton. इन्होंने लिखा था ये. Subtitle of this tragedy is Ferrex and Porrex. That is the subtitle of this tragedy, because Ferrex and Porrex, they are the two sons of Gorboduc. Gorboduc के दो बेटे होते हैं. Ferrex is the eldest, is the elder son, and Porrex is the younger son. ठीक है, तो ये उसके बेटों के नाम से इसका subtitle है. And Gorboduc is the first English tragedy. Clear? And it is the first tragedy that was written in blank verse. ठीक है, ये पहली tragedy है that was written in blank verse, जो blank verse में लिखी गई थी. Blank verse I have already discussed. Blank verse का मतलब क्या होता है? Blank मैंने क्या होता है? Unrhymed. Blank verse का मतलब क्या होता है? Unrhymed verse. Unrhymed verse क्या होता है? At the end of the lines there is no rhyme scheme. Rhyme scheme नहीं होती lines के end में, एक जैसी आवाज वाले शब्द नहीं आते. Secondly, blank verse में मैंने आपको बताया था that in each and every line there are 10 syllables. 10 syllables होते हैं. तो इस पे मैं लेक्चर सारे डिलीवर कर चुका हूं, and I think you are able to understand that one. And this tragedy was written by two persons, Thomas Norton and Thomas Sackville. They wrote this tragedy, first English tragedy, Gorboduc. Okay.
And this tragedy was performed in 1561. You must remember, this tragedy was performed in 1561. And this tragedy follows all the three unities. तीनों unities को follow करती है, time, place and action. Unity of time, I think you know. Unity of time says that the play must be completed within 24 hours. Unity of time कहता है कि play 24 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए. Unity of place क्या कहती है that all the action must be done in one place. सारे action एक ही जगह पे होने चाहिए. It means अगर कोई play चंडीगढ़ के बारे में लिख रहा है तो सारे action चंडीगढ़ में ही होने चाहिए. और unity of action क्या कहता है that there should be single story, कि एक कहानी होनी चाहिए, एक से ज्यादा कहानी नहीं होनी चाहिए. और गौरबड़क जो है it follows all the three classical unities, and that's why this play was praised by Sir Philip Sidney. Sir Philip Sidney is one of the great writers belonging to Elizabethan age. ठीक है, Elizabethan age से Sir Philip Sidney belong करता है, one of the great writers है. तो Sir Philip Sidney, he praised this tragedy in his critical book. अपने critical book में praise किया, और book का नाम क्या था? Apology for Poetry. That was published in 1595. 1595 में ये book published हुई थी. Clear? तो Sir Philip Sidney became the first English critic to write a work of criticism. ये पहला बंदा था जिसने criticism की कोई book लिखी थी. So Sir Philip Sidney is a very famous writer belonging to the Elizabethan age. He was Edmund Spenser's friend, if you remember. Edmund Spenser dedicated his first poem, The Shepherd's Calendar, to Sir Philip Sidney. Sir Philip Sidney को dedicate की थी. And this tragedy, Gorboduc, it influenced William Shakespeare's two plays. So William Shakespeare's play King Lear and William Shakespeare play Titus Andronicus. So both these plays, they are based on Gorboduc. Gorboduc के ऊपर based है. Clear? So the story of this play I want to discuss with you. Otherwise the lecture will be quite long. But if you want, I can tell the story in brief. Gorboduc is the king of England. On growing old, he decides to divide his kingdom among his two sons. अपने दोनों बेटों में के बांट देता है kingdom, Ferex and Porrex में. But what happens that the two brothers, they become enemy, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं. And Porrex, who is the younger brother, he murders Ferex, elder का murder कर देता है. ठीक है. और जो mother होती है, she loves elder brother more. तो माता Ferex से ज्यादा प्यार करती है. And then what happens that the mother of Ferex, she murders Porrex. वो Porrex को murder कर देती है. छोटा भाई बड़े भाई का murder करता है, और माँ क्या करती है? छोटे बेटे को ही मार देती है, because she loves her elder brother more. तो उसको वो मार देती है. And what happens that the people, they stand in religion and they kill both king and queen. दोनों को मार देते हैं. And then there is unrest in England. England में अशांति सी फैल जाती है. तो ये story है Gorboduc की. King Lear की भी यही story है कि King Lear, he divides his kingdom among his three daughters called that is Goneril, Regan and Cordelia. But he doesn't give the third share to Cordelia. Cordelia को हिस्सा नहीं देता. And he divides his complete kingdom among his two daughters, Goneril and Regan. और उसके बाद जो होता है वो आप देखते हो. Titus Andronicus में भी यही है. So William Shakespeare, these two play King Lear and Titus Andronicus, they are based on Gorboduc. तो आपको first tragedy याद रखनी है. That's really important. Now come to first comedy. And first comedy was Ralph Roister Doister. That was the first comedy, first English comedy, you must remember. So the first English comedy is Ralph Roister Doister, and it was written by a schoolmaster. एक schoolmaster ने लिखी थी जिसका नाम था Nicholas Udall. So that was written by a schoolmaster whose name was Nicholas Udall. First English tragedy. And it was written by Nicholas Udall, and it is based on Roman playwright. एक Roman playwright है Plautus,
उसकी बुक है माइल्स ग्लोरियस, उसके ऊपर बेस्ड है. दिस इज अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड इट वाज परफॉर्म्ड इन 5053 में इसको परफॉर्म किया गया था. And what is the theme of this comedy? That the central character of this comedy is Ralph Royster Doyster, and this play deals with Royster's attempt and his failure to woo an already engaged lady. कि एक already engaged lady होती है, Dame Constance. So Ralph Doyster he tries to win that lady. उस lady को क्या जी जीतने की कोशिश करता है, but he fails in his attempt. तो ये इसकी स्टोरी है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर की. तो you must remember the first English comedy, the first English tragedy, and who wrote that one. ठीक है, yes, कॉमेडी पहले आई थी, ट्रेजेडी बाद में. I agree with you, Amandeep. And I have uploaded one video on my YouTube channel also, Oxbridge English, in which you will find the topic development of drama. In that video, I have explained development of drama in detail. So सारी stages में मैंने development of drama discuss किया, तो you can watch that video for detail. Now, another very important fact about the Elizabethan age is university wits. Because tragedy and comedy started during the Elizabethan age, and then there was a group of 7 scholars. They are known as university wits. Wits here stands for scholars. Actually, they passed their degree either from Oxford or Cambridge, and then they all started writing plays. सभी ने नाटक लिखना शुरू कर दिया. So they are known as university wits. तो वो कौन-कौन से 7 पर्सन हैं आपको पता होने चाहिए. That's important. And from Oxford University, John Lilly, Thomas Laws, and George Peel, they got their degree. From Cambridge University, Robert Greene, Thomas Nash, and Christopher Marlowe. Clear? They got their degree. And there was one university wit who was not able to complete his degree, जिसकी डिग्री पूरी नहीं हुई थी, and that was Thomas Kidd. तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि who is not one of the 7 university wits, तो उसमें Thomas Kidd को हम नहीं शामिल करते because he was not able to complete his degree. So these are 7 university wits. You must remember John Lilly, Thomas Lodge, and George Peel, Robert Greene, Thomas Nash, Christopher Marlowe, and Thomas Kidd. Christopher Marlowe is prescribed in your syllabus, and we have discussed that writer in detail, but you must remember these 7 university wits. So I will talk about now some of the important university wits. First is John Lilly, who is the first university wit to get success. जिस university wit को सबसे पहले सफलता मिली वो John Lilly था. John Lilly was a comedian. He has written comedies. So I won't discuss John Lilly in detail. John Lilly को detail से नहीं discuss करूंगा यहाँ पर. I will point out only to 2 important works of John Lilly. Otherwise, John Lilly has written a number of comedies. That is, he also invented a literary style. इसने एक literary style भी invent किया था, and the name of that style is euphemism. उसके literary style को euphemism कहते हैं. Now, what is euphemism? Actually, in euphemism, the ideas are arranged in antithesis. जो ideas होते हैं वो contrastive होते हैं. So, contrastive ideas are arranged. That is, contrastive ideas are arranged. That is called euphemism, not euphemism. Euphemism is different. Euphemism is different. So euphemism is a literary style in which the ideas are combined in contrast. Contrast में ideas को arrange किया जाता है, and the contrast is marked through alliteration. Alliteration के द्वारा contrast को दिखाया जाता है. Contrast जानते हो? विरोधाभास. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, to err is human, to forgive is divine. गलतियां करना इंसान का काम है, माफ करना भगवान का काम है. क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड
that is called antithesis, that is called contrast, that I have already discussed with you. ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं. तो ये यूफिज्म आपको पता होना चाहिए, लिटरेरी स्टाइल. So his two important work are Euphus, Anatomy of Wit, Euphus and his England, 1580. So Euphuism, this style has come from the central character Euphus. Euphus is the central character of these two prose works. Euphus, the Anatomy of Wit, which was published in 1578, and then came its a sequel. Iska sequel आया था Euphus and his England in 1580. And John Lilly is also famous for his one comedy, that is Endymion. I won't talk about each and every comedy of John Lilly. That is not so important for master cadre. For net examination, each and every comedy of John Lilly is important. So I will talk about these three works of John Lilly. First of all, Euphus, Anatomy of Wit. Anatomy, do you know? Anatomy of Wit मैंने क्या होता है? बुद्धिमत्ता की एक मूर्त. Anatomy का मतलब क्या होता है? Skeleton. So Euphus is the symbol of wit because Euphus is really very witty. बिल्कुल बहुत intelligent होता है. And that book was published in 1578. और Euphus is a Greek word. इसका meaning होता है witty. और the title of this book has been taken from Roger Ascham. बताया था. He was Elizabeth I's tutor. His book, that is the schoolmaster से ये लिया गया है. And Euphus actually he belongs to Athens. Athens is a city in Italy. वहां से belong करता है. He visits Naples. ये Naples आता है. And there he becomes a friend of Philotas. Philotas का दोस्त बन जाता है. कहानी बता रहा हूँ, बिल्कुल interesting story है इसकी. And what happens that Euphus he falls in love with his friend's beloved. अपने friend की प्रेमिका के प्यार में पड़ जाता है, जिसका नाम क्या होता है? लुसीला. अब दोनों दोस्त क्या होते हैं? They become enemy. दोनों दोस्त दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि Euphus has fallen in love with his friend's beloved Lucilla and they exchange taunting letters. अपने एक दूसरे को letters लिखते हैं, challenging letters लिखते हैं. But what happens? Lucilla she proves too clever and she runs away with somebody else. She marries somebody else. Lucilla किसी और से शादी कर लेती है. तो दोनों दोस्त जो पहले दुश्मन बन गए थे लुसीला के कारण, they become friend again. दोबारा दोस्त बन जाते हैं. ठीक है जी. They become friend again because Lucilla has married somebody else. तो ये पहले बुक की कहानी है, Euphus, Anatomy of Wit, 1578. And another part is Euphus and his England, that was published in 1580. Now in this book, Euphus and his friend Philotas, they visit England आते हैं. And Philotas, who is Euphus' friend, he falls in love with Camilla के प्यार में पड़ जाता है, who is Queen Elizabeth's maid. उसकी नौकरानी होती है, उसके प्यार में पड़ जाता है. But Camilla loves somebody else. Camilla किसी और से प्यार करती है. And what happens? That finally Philotas falls in love with another girl whose name is Frances. तो ये स्टोरी है Euphus and his England की. तो ये जॉन लिली के बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. ठीक है. And Euphus comes back to Athens. This is the story of these two books. Now Endymion, that is a wonderful comedy by John Lilly. If you remember, John Keats has also written a poem with the same title, Endymion, in which John Keats talks about beauty. Beauty की बात करता है और उस poem की first line है, a thing of beauty is a joy forever. I think you remember that one. The subtitle of this comedy written by John Lilly is The Man in the Moon. And it has a prologue and epilogue also like GB Show. GB Show के जो play होते हैं, उनका क्या होता है? Prologue और epilogue होता है. Prologue means introduction and epilogue means conclusion. And in this comedy, John Lilly, he talks about Endymion's love for Queen Cynthia. Queen Cynthia से वो प्यार करता है Endymion. और इसमें Endymion से एक लेडी प्यार करती है जिसका नाम होता है टेलस. तो वो क्या करती है? She uses magic and she sends Endymion into sleep. वो वहां पर जूस की सहायता से
इंडीमियो को क्या कर देती है, परमानेंटली नींद में भेज देती है. बट इंडीमियो ही कम्स बैक फ्रॉम स्लीप, स्लीप से वापस आता है. और इसमें जो क्वीन सिंथिया है, शी रिप्रेजेंट्स क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. और इस बुक में पाइथागोरस, पाइथागोरस आपने सुना होगा, एक ग्रीक मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर था. वो सबसे पहले एज ए कैरेक्टर आता है. जैसे जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में कौन आता है, गैलीलियो. सो गैलीलियो अपीयर्स in John Milton's Paradise Lost. So similarly, another scientist, Pythagoras, he appears as a character in this play. And John Keats' poem Endymion is based on it. ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड है. Similarly, this comedy highly influenced विलियम शेक्सपियर टू कॉमेडीज. विलियम शेक्सपियर की दो कॉमेडीज को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था. वन वॉज लव्स लेबर्स लॉस्ट and the second was A Midsummer Night's Dream. So William Shakespeare, these two comedies, Love's Labor Lost and A Midsummer Night's Dream, they were highly influenced by this John Lilly's this comedy Endymion. Now another important university wit is Thomas Nash. Actually Thomas Nash is famous for his one work. अपने एक one work के लिए famous है. And the name of that work is The Unfortunate Traveler. It has a subtitle also, The Life of Jack Wilton, because Jack Wilton is the central character of this play. Why Thomas Nash, this work is important? Because this work is the first Picarus work. ये पहला Picarus work है. Picarus novel आपने सुना होगा. Picarus novel is also known as a journey novel. Because in Picarus novel, the central character, he goes on a journey and so many incidents happens to the hero, some good ones, some bad ones, but at last he comes back. लेकिन last में वो वापस आ जाता है. जैसे Henry Fielding has written, बिल्कुल adventurous novels होती हैं. Henry Fielding has written Picarus novels like Joseph Andrew and Tom Jones. These are the Picarus novels written by Henry Fielding. So you must remember that one. So Thomas Nash, The Unfortunate Traveler, is the first Picarus novel. Yes, Pulley is also a Picarus novel. And this book was set during Henry VIII reign. Reign मैंने क्या था, rule. Henry VIII जो राजा था उसके दौरान ये set है. And this book deals with adventures of Jack Wilton के adventures को इसमें बताते हैं. तो Thomas Nash क्यों famous है? Thomas Nash is famous for this book. आपको याद रखना बहुत important है. The Unfortunate Traveler or The Life of Jack Wilton. Why? Because it is the first Picarus work in English. And Thomas Nash is also important because Thomas Nash completed Christopher Marlowe's incomplete play Dido, Queen of Carthage, because Christopher Marlowe, he died in a brawl, एक fighting में ये मर गया था, and then his play Dido, Queen of Carthage was left incomplete and it was completed by Thomas Nash. ये आपने याद रखना है. Another important university wit is Thomas Kidd. Thomas Kidd has written one tragedy, एक ही tragedy लिखी है, and that is known as the Spanish tragedy. सबसे फेमस ट्रेजेडी है ये. एंड टॉमस किड इज कॉल्ड स्पॉटिंग किड बाय बेन जॉनसन. बेन जॉनसन आपके सिलेबस में लगा हुआ है. बेन जॉनसन हैज कॉल्ड टॉमस किड a spotting kid. Clear? So he is famous for his one play, and the name of that play is the Spanish tragedy. Now I will talk about Spanish tragedy to some detail because it's one of the best plays written during Elizabethan period. Elizabethan period में जो play बहुत popular हुए उनमें से एक है. The subtitle of this play is Hieronymo is Mad Again. Hieronymo is one of the important characters in this play. So that is the subtitle. क्योंकि नेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं स्पेनिश ट्रेजेडी से, इसका टाइटल सबटाइटल आता है. It is a revenge tragedy. Revenge tragedy, I think you know. A revenge tragedy is that tragedy whose central theme is revenge, बदला होता है, in which
अ पर्सन इज मर्डर्ड इन ए फाउल मैनर, जिसमें एक पर्सन को गलत तरीके से मारा जाता है, एंड द गोस्ट ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति का भूत, अपीयर्स टू हिज फ्रेंड और रिलेटिव, अपने फ्रेंड और रिलेटिव के पास आता है, एंड आस्क हिम टू टेक रिवेंज, और उसे कहता है कि आपने बदला लेना है। जैसे अगर आपको याद हो तो विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट, बिकॉज इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट, Hamlet's father is murdered. बिल्कुल, Titus Andronicus, I agree. So in William Shakespeare's play Hamlet, Hamlet's father is murdered in a foul manner. Then the ghost of Hamlet's father appears to Hamlet and asks him to take revenge. So Hamlet is also a revenge tragedy. Titus Andronicus, who is a Roman play, first Roman play, is also a revenge tragedy. So Spanish tragedy is a revenge tragedy. And there is also a play within a play, as there was a play within a play in Hamlet also. Hamlet में भी play within a play था जिसका नाम था The Mouse Trap. अगर आपको याद हो जब मैंने करवाया था, that is also known as The Murder of Gonzago. ठीक है, The Mouse Trap or The Murder of Gonzago. ठीक है, शेक्सपियर्स हैमलेट, शेक्सपियर का प्ले जो हैमलेट है इज बेस्ड है किसके ऊपर बेस्ड है? द स्पेनिश ट्रेजेडी पर बेस्ड है. Why? Because it was Thomas Kyd who started a new thing in tragedy, जिसने ट्रेजेडी में एक नई चीज शुरू की, and that new thing is called introspection, जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं. इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रो मैंने क्या होता है? सेल्फ. स्पेक्शन मैंने क्या होता है? टॉकिंग. तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? सेल्फ टॉकिंग, अपने आप से बातचीत करना. लेटर ऑन दिस एलिमेंट वाज कॉल्ड soliloquy. बाद में इसको क्या कहा गया? soliloquy. soliloquy आप जानते हो, दो शब्दों से बना है, सोल और लॉक से. सोल का मतलब क्या होता है? सिंगल. लॉक का मतलब होता है स्पीच. तो soliloquy का मतलब क्या होता है? टॉकिंग टू वन सेल्फ. एंड then William Shakespeare, he made use of introspection, he made use of soliloquy. उसने soliloquy का प्रयोग किया in his plays. अपने plays में जो शेक्सपियर है, he makes use of introspection, he makes use of soliloquies. तो ये इसने न्यू एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया. तो ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के. डॉन आंद्रे, who is a Spanish nobleman. Valentina, who is Don Andres' wife. Horatio, who is Don Andres' friend. Hieronymo, who is Horatio's father. Lorenzo, Valentina's brother. Balthazar, prince of Portuguese. क्या स्टोरी है इसमें कि डॉन आंद्रे इज मर्डर्ड बाय बाल्थेजर. बाल्थेजर डॉन आंद्रे का मर्डर करता है इन ए फाउल मैनर. देन द गोस्ट ऑफ डॉन आंद्रे, डॉन आंद्रे का जो भूत है, कम्स टू होरेशियो. होरेशियो के पास आता है जो डॉन आंद्रे का फ्रेंड होता है, एंड टेल्स हिम द कंप्लीट स्टोरी एंड आस्क हिम टू टेक रिवेंज. सो व्हेन होरेशियो विजिट्स बेलम्पीरिया, जब होरेशियो बेलम्पीरिया के पास जाता है इन ऑर्डर टू टेल हर द रियलिटी दैट हाउ हर हस्बैंड वाज मर्डर्ड, कि उसके हस्बैंड को कैसे मारा गया. तो बेलम्पीरिया क्या होती है? शी फॉल्स इन लव विद होरेशिया, होरेशियो के प्यार में पड़ जाती है. तो जब लोरेंजो, हु इज बेलम्पीरिया's brother, he comes to know that Belimperia has fallen in love with Horatio, तो लोरेंजो क्या करता है? लोरेंजो along with Balthazar, दोनों के साथ मिलकर he murders Horatio. होरेशियो का मर्डर कर देते हैं लोरेंजो और बाल्थेजर. And Hieronymo, who is Horatio's father, now he feels madness, पागल होने का ढोंग करता है. अगर आपको याद हो तो शेक्सपियर प्ले में जो हैमलेट है वो भी क्या होता है? पागल होने का ढोंग करता है. तो ये एक अनदर एलिमेंट होता है रिवेंज ट्रेजेडी का. रिवेंज ट्रेजेडी हैज सेवरल फीचर्स. तो पागल होने का ढोंग करना, जैसे हैमलेट ढोंग करता है. ठीक है जी. तो Hieronymo, he pretends to be mad in order to find out who are the murderer of my son. And when he comes to know that Lorenzo and Balthazar, they have murdered my son, so a play is performed. एक स्टेज पे प्ले परफॉर्म्ड होता है, और उस प्ले में क्या होता है? Hieronymo, he murders both Lorenzo and Balthazar, दोनों को मार देता है. And in this process, Hieronymo is also murdered. ठीक है. तो ये रिवेंज ट्रेजेडी आप जानते हो. लगभग हैमलेट इसी के ऊपर बेस्ड है. होरेशियो हैमलेट में भी कैरेक्टर है जो हैमलेट का फ्रेंड होता है.
ठीक है. Now, during the Elizabethan period, also started sonnet writing. Sonnet writing शुरू हुई, poetry शुरू हुई, sonnet लिखना शुरू किया. What is a sonnet? I think you know. Sonnet is a poem of 14 lines, and sonnet started in Italy. ये इटली में शुरू हुआ था. But sonnet into England was introduced by, इंग्लैंड में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? दो बंदों ने, हेनरी हॉवर्ड सरे एंड थॉमस वियॉर्ड. So these two writers, they introduced sonnet into England. इन्होंने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया. तो सोनेट क्या होता है? अब इटालियन ओरिजिन का है. अ पोएम ऑफ 40 लाइंस होती है. दो प्रकार के सोनेट्स बड़े पॉपुलर हैं. वन इज द पेट्रार्कन सोनेट, सेकंड इज द शेक्सपियरियन सोनेट. पेट्रार्कन जो था वो पेट्रार्क के नाम से. पेट्रार्क कौन था? एक ग्रेट इटालियन पोइट, एक बहुत इटली का महान पोइट था. तो उसके नाम से पेट्रार्कन सोनेट हुआ. पेट्रार्कन सोनेट आप जानते हो कि 14 लाइन को कैसे बांटते हैं? दो पहरे में, ऑक्टेव में, इन विच देयर आर 8 लाइंस, एंड सस्टेट इन विच देयर आर 6 लाइंस. तो पेट्रार्कन सोनेट को ऐसे बांटा जाता है 8 और 6 में. 8 लाइनों के पहरे को ऑक्टेव कहते हैं. ऑक्टेव मैंने अपने आप में 8 होता है, सस्टेट मैंने 6 होता है, तो 6 लाइन के पहरे को सस्टेट कहते हैं. और राइम स्कीम क्या होती है? एक्चुअली द राइम स्कीम ऑफ ऑक्टेव इज फिक्स्ड. ये फिक्स्ड होती है हमेशा. क्या होती है? ए बी बी ए बी बी ए. बट द राइम स्कीम ऑफ सस्टेट इज नॉट फिक्स्ड. ये फिक्स्ड नहीं होती. ये होती है सी डी ई, सी डी ई, सी डी सी, सी डी सी. तो ये फिक्स्ड नहीं होती, तो ये चेंज होती रहती है. अब ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड 3 सोनेट कलेक्शन बड़े पॉपुलर हैं. सर फिलिप सिडनी का एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, स्पेंसर्स का अमोरिटी, और शेक्सपियर सोनेट. So these 3 collections are really very important. I will talk about these 3 collections in detail one by one. First of all, I will talk about Astrophel and Stella. Astrophel and Stella is a collection of sonnet by Sir Philip Sidney, who was Edmund Spenser's friend. It was published in 1591. It is Sir Philip Sidney's first work, and it is a collection of 108 Petrarchan sonnet. इसके अंदर 108 Petrarchan sonnet है, and 11 songs. नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बार बार क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोफेल एंड स्टेला किसने लिखा, कब पब्लिश हुआ, कितने सोनेट्स हैं, कितने गाने हैं. ठीक है. और सोनेट अगर आपको याद हो, सोनेट हैज मैनी फीचर्स. तो लाइक एन ओड, जैसे एक ओड होता है, वैसे एक सोनेट जो होता है, इट इज ऑलवेज एड्रेस्ड टू ए पर्सन और थिंग. हमेशा किसी व्यक्ति ना वस्तु को संबोधित होता है. तो हमेशा किसी न किसी को एड्रेस्ड होता है. एंड एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, सो दीज सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू सर फिलिप सिडनीज बिलवेड. उसकी प्रेमिका को संबोधित है, जिसका नाम है लेडी पेनल्पी. उसको ये एड्रेस्ड है. ज्यादा मैं डिटेल से नहीं बात करूंगा इन सोनेट्स की. आई विल मेक सेपरेट lecture on Sir Philip Sidney, because Sir Philip Sidney is a huge writer. So a separate lecture is required on Sir Philip Sidney, and it deals with Sir Philip Sidney's unfulfilled love for Lady Penelope. Lady Penelope के लिए अधूरे प्यार की कहानी है, because Lady Penelope she marries somebody else, किसी और से शादी कर लेती है. ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि जो सिडनी होता है, ही इज इन कॉन्फ्लिक्ट. वो कॉन्फ्लिक्ट में होता है कि वेदर ही शुड प्रपोज लेडी पेनल्पी और नॉट, बिकॉज लेडी पेनल्पी मैरिजेस अ पर्सन नेम्ड लॉर्ड रिच. लॉर्ड रिच नाम के बंदे से ये शादी कर लेती है. तो इसका दिल कहता है प्रपोज कर दो, माइंड कहता है प्रपोज मत कर, बिकॉज शी इज ऑलरेडी ए मैरिड वुमेन. लेकिन ये प्रपोज कर देता है. दूसरे पार्ट में ये क्या बताता है? फ्रेंडशिप विद लेडी पेनल्पी. But what happens at the end of these sonnets? In sonnets के end में क्या होता है कि his friendship, Sir Philip Sidney's friendship with Lady Penelope is severed. वो खत्म हो जाती है, end हो जाती है, and he turns away from Penelope. तो ये brief में मैंने आपको बताया है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के बारे में. इसके काफी sonnets भी बड़े popular हैं Sir Philip Sidney के. With how sad steps. There are several others very beautiful sonnets written by Sir Philip Sidney. So I will deliver a separate lecture on Sir Philip Sidney later on. Now come to Shakespeare sonnets. Shakespeare sonnets, you know that Shakespeare has written 154 sonnets.
They were published in 1609, and the first 126 sonnets, they are addressed to his patron, Mr. W.H., the Earl of Southampton के नवाब को संबोधित हैं. The next 26 sonnets are addressed to a dark lady, and the last 2 sonnets, they are neither addressed to Mr. W.H. nor to dark lady. They are sexual in theme. वो थीम में सेक्सुअल हैं. और पैटर्न क्या है? शेक्सपियर के सोनेट का पेट्रार्कन सोनेट से थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होता है. शेक्सपियर के सोनेट में 14 लाइनों को कैसे बांटा जाता है? 3 क्वार्टरिन, 3 चौपाइयों में. क्वार्टरिन वर्ड कहां से बना है? क्वार्टर से. क्वार्टर में नहीं कहता 4. तो क्वार्टरिन का मतलब क्या होता है? स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स. तो 4-4 लाइन के 3 स्टेंजे होते हैं, तो 4 × 12, और एक कपलेट होता है. कपलेट कहां से बना है? कपल से. कपल का मतलब क्या होता है? 2. तो स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स. तो ऐसे 14 लाइन को बांटा जाता है 4-4 के लाइन के 3 पैरों में, और फिर एक 2 लाइन का पैरा. इसमें राइम स्कीम क्या होती है, ये हमेशा आपने याद रखनी है. ABAB, CDCD, EFEF, GG. दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट राइम स्कीम. ये काफी बार नेट में आई है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई है. This is sufficient about Shakespeare sonnet. Otherwise, I have discussed this topic in detail in my separate videos. Separate videos में मैंने Shakespeare 4, those 4 lectures I have discussed William Shakespeare in great detail. So that's sufficient for this age. Now come to another sonnet sequence, and the name of the another sonnet sequence is Amority. That was published in 1595. So it is a sequence of 89 sonnets written by Edmund Spenser. ये Edmund Spenser ने लिखे हैं. 89 sonnets हैं, and these sonnets are addressed to Edmund Spenser's beloved Elizabeth Boyle को संबोधित हैं. And these sonnets, like Astrophel and Stella, deals with Edmund Spenser's unfulfilled love for Elizabeth Boyle. उसके साथ ये डिस्कस करती हैं. और इसकी राइम स्कीम क्या है? आपने इसकी राइम स्कीम भी याद करनी है, क्योंकि एडमंड स्पेंसर विलियम शेक्सपियर के भी पैटर्न को फॉलो करता है. एडमंड स्पेंसर के सोनेट में भी क्या होते हैं? 4-4 लाइन के 3 पैरे होते हैं और एक 2 लाइन का पैरा होता है. बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज इन द राइम स्कीम. जो एडमंड स्पेंसर की राइम स्कीम होती है, दैट इज इंटरकनेक्टेड, आपस में इंटरकनेक्टेड होती है. अगर आप यहाँ पे देखो तो ABAB, अब देखो 5th लाइन किससे शुरू हो रही है? बी से. देखो कनेक्ट कर दिया इसने, अगले पैरे को पीछे वाले पैरे से कनेक्ट कर दिया. ABAB, BCBC, फिर देखो नेक्स्ट हमारा पैरा शुरू हो रहा है, देखो C से शुरू हो रहा है, देखो C कनेक्ट हो गए. तो ऐसे ये इंटरकनेक्टेड है. ABAB, BCBC, CDCD, EE. और विलियम शेक्सपियर की जो राइम स्कीम है वो इंटरकनेक्टेड नहीं है. ABAB, CDCD, EFEF, GG, ये विलियम शेक्सपियर की है. ठीक है. सर फिलिप सिडनी के बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, क्योंकि ही इज वन ऑफ द ग्रेट राइटर्स बिलोंगिंग टू एलिजाबेथन पीरियड. आई विल डिलीवर ए सेपरेट लेक्चर ऑन सर फिलिप सिडनी. लेकिन इसके 2 वर्क और बहुत फेमस है. कि इसका वर्क आर्केडिया बहुत फेमस है. एक्चुअली आर्केडिया इज द फर्स्ट पेस्टरल रोमांस इन इंग्लिश. इंग्लिश में जो पहला पेस्टरल रोमांस है वो कौन सा है? आर्केडिया. एंड डू यू नो फर्स्ट पेस्टरल रोमांस इन वर्स? पोइट्री में पहला पेस्टरल रोमांस कौन सा है? द शेपर्ड्स कैलेंडर, रिटन बाय एडमंड स्पेंसर. दैट इज द फर्स्ट पेस्टरल रोमांस इन पोइट्री. एंड द फर्स्ट पेस्टरल रोमांस इन प्रोज इज सर फिलिप सिडनीज आर्केडिया. पेस्टरल, डू यू नो, whose setting is rural, जिसकी सेटिंग रूरल होती है. ठीक है. एंड whose hero is shepherd, जिसका हीरो क्या होता है? गडरिया होता है. उसे हम क्या कहते हैं? पेस्टल कहते हैं. तो बिल्कुल, इट वाज पब्लिश्ड इन 1579. 1579 में पब्लिश हुआ था. इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ से डिस्कस करूंगा, ज्यादा डिटेल से नहीं. ठीक है. एंड दिस आर्केडिया डील्स विद किंग बैसिलस ऑफ आर्केडिया. आर्केडिया का राजा होता है किंग बैसिलस, और उसकी यंग वाइफ होती है जिनेशिया, और उसकी 2 बेटियां होती हैं पैमिला एंड फिलोक्ली. उनकी कहानी को डिस्कस करता है. दो इट इज ए ग्रेट वर्क. सो आई व्हेन आई डिलीवर ए लेक्चर ऑन सर फिलिप सिडनी, आई विल डिस्कस आर्केडिया इन ग्रेट डिटेल. बट जहां तक एलिजाबेथन एज की बात कर रहे हैं,
तो आपको ये याद रखना है, दिस प्ले डील्स विद किंग बैसिलिस and his young wife Genesia and his two daughters Pamela and Philoclea. Why is it important? Because do you know Samuel Richardson, who started epistolary novel, जिसने epistolary novel लिखे थे? Epistolary novel मतलब क्या होता है? Letter. So Samuel Richardson started a new type of novel that is called epistolary novel. And Samuel Richardson's first novel was Pamela, that was published in 1740. 1740 में published हुई थी. And its subtitle was A Pure Woman. Sorry, its subtitle was Virtue Rewarded. ये इसका subtitle था. So Samuel Richardson, he took the title of his very first novel Pamela from Sir Philip Sidney's book Arcadia. यहाँ से उसने टाइटल लिया था, क्योंकि किंग बैसिलस की बेटी का नाम क्या था? पैमिला. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. So Samuel Richardson, he took the title of his very first novel Pamela or Virtue Rewarded, which was published in 1740 from Sir Philip Sidney's book Arcadia. से उसने टाइटल लिया था. Sir Philip Sidney is also famous for his one critical book, and the name of that critical book is An Apology for Poetry or Defense of Poesy. That book was published in 1595, and this book came as a reply. ये बुक किसके रिप्लाई में आई थी? टू स्टीफन गॉसन्स पैम्पलेट. एक स्टीफन गॉसन राइटर था, उसने एक बुक लिखी स्कूल ऑफ अब्यूज. एंड इन दिस बुक स्टीफन गॉसन ही क्रिटिसाइज्ड पोइट्री. उसने पोइट्री को क्रिटिसाइज किया था. सो इन ऑर्डर टू डिफेंड पोइट्री, सर फिलिप सिडनी, he wrote this book, and the name of that book is An Apology for Poetry, in which he defends poetry. Poetry को defend करता है. I will discuss this book in detail when I deliver my lecture on Sir Philip Sidney. This is one of the great critical books written by English writers. So that's sufficient. ये first piece of literary criticism है. पहला इंग्लिश में लिखा गया जो क्रिटिकल वर्क है वो है An Apology for Poetry or Defense of Poetry by Sir Philip Sidney, जो Elizabethan Age में लिखा गया. Now, during the Elizabethan period, theaters became very popular. बहुत सारे थिएटर पॉपुलर हुए. Theaters became very popular. The first theater was the theater. ये आपको याद रखना है. ये first theater था. That was established in 1576. But the most important theater belonging to the Elizabethan period was the Globe. Globe सबसे फेमस था. पहला याद रखना है, first theater के नाम the theater था. That was established in 1576. But the most important theater belonging to the Elizabethan period was the Globe. ये कब established हुआ था? This theater was established in 1599, and Shakespeare's plays were performed in this theater. इस theater में शेक्सपियर के प्ले परफॉर्म होते थे. और जो पहला प्ले यहाँ पे परफॉर्म किया गया था उसका नाम था जूलियस सीजर. ठीक है. और इस थिएटर के गेट पे एक हरकुलस, एक ग्रीक योद्धा है, उसकी तस्वीर थी. उसने अपने कंधे पे ग्लोब उठाया हुआ था. ठीक है. सो अबव द एंट्रेंस क्रस्ट ऑफ दिस थिएटर देयर वाज हरकुलस कैरिंग द ग्लोब ऑन हिज शोल्डर्स. और उस ग्लोब के ऊपर क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था टोटस मुंडस एजिट हिस्टियोनम. मीनिंग इसका इंग्लिश में क्या आता है? द होल वर्ल्ड इज ए प्ले हाउस. ठीक है. इफ यू रिमेंबर विलियम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट, इन विच जेक्स ही डिलीवर्स ए वंडरफुल स्पीच, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज. ठीक है. एंड ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज and all men and women mere players, they have their exist and entrance also. तो वही डायलॉग यहाँ पे लिया गया है, the whole world is a playhouse. ठीक है. But this theater was destroyed in fire. इसको आग लग गई थी इस थिएटर को on 29th June 1613 when William Shakespeare's play Henry VIII was being performed there. जब ये परफॉर्म हो रहा था तब इसको आग लग गई थी. But this theater was rebuilt in 1614. तो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं नेट में.
और आई हैव डिलीवर्ड सेपरेट लेक्चर ऑन एलिजाबेथन थिएटर पे मैंने पूरा एक लेक्चर डिलीवर किया है, एंड दैट लेक्चर इज अवेलेबल ऑन माय YouTube channel Oxbridge English. So if you are interested to know in detail about Elizabethan theater, then you can watch that video on my YouTube channel Oxbridge English. Now I will discuss some theaters, chronology of some theaters, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन सा एलिजाबेथन थिएटर है, कौन सा नहीं है, और कई बार उनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं। तो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ। पहला थिएटर द थिएटर था, दैट वाज ओपन इन 1576। दूसरे थिएटर का नाम था द कर्टन, और साथ साथ एक और थिएटर इसी साल में खुला था, द न्यू इंगटन बट्स। फिर आया द रोज विच वाज established in 1587. Then came the Swan, that was opened in 1595. Then came the Globe, ये ग्लोब है, ग्लोब नहीं है, ये बी आएगा, ठीक है, ग्लोब 1599. Then came the Fortune. 1600 में दो थिएटर ओपन हुए थे, द फॉर्च्यून एंड द बॉयर्स हेड. Then in 1604 came the Red Bull, ये Red Bull हुआ। लेकिन ये जो सारे थिएटर्स थे, they were closed in 1642. आपको याद रखना है 1642 में सारे थिएटर्स बंद हो गए थे। when the civil war started, जब सिविल वॉर शुरू हुआ था between Charles I and the Puritans, ठीक है, and the theaters were opened in 1660. 1660 में थिएटर खुले थे when Charles II became the King of England, and then the theaters were opened in 1660. Now I will talk about some important drama groups or troupes. Actually, some drama groups, they used to perform in these theaters. In theater में कुछ drama groups perform करते थे। जैसे शेक्सपियर के प्ले एक ड्रामा ग्रुप परफॉर्म करता था, क्रिस्टोफर मार्लोव के प्ले दूसरा ड्रामा ग्रुप परफॉर्म करता था, और बाकी यूनिवर्सिटी विट्स के जो प्ले हैं कोई और ड्रामा ग्रुप परफॉर्म करता था। तो वो ड्रामा ग्रुप आपको पता होना चाहिए। देयर मे बी क्वेश्चन ऑन द ड्रामा ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो ड्रामा ग्रुप था वो था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ये जो ड्रामा ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ था 1594 में हुआ था, और इसे शेक्सपियर की कंपनी भी कहते हैं क्योंकि ये शेक्सपियर के प्ले परफॉर्म करते थे। और इस कंपनी ने सबसे पहले परफॉर्म किया था द कर्टन में, और फिर इन्होंने ग्लोब में परफॉर्म करते थे। यू नो दैट ग्लोब थिएटर इज नोन टू बी शेक्सपियर्स थिएटर बिकॉज शेक्सपियर्स थिएटर प्लेस वर परफॉर्म्ड देयर, and Lord Chamberlain's men, they used to play William Shakespeare's play, और इस को किंग्स मैन भी कहा गया। 1603 when Elizabeth I died and King James I, he became the king of England, इसका नाम चेंज हो गया, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन से इसका नाम क्या हो गया, किंग्स मैन हो गया। इसके दो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, एक्टर्स थे, वो आपको पता होना चाहिए। One was Richard Burbage, and Richard Burbage, he always performed tragic roles of William Shakespeare's play, जैसे Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear, Julius Caesar, Titus Andronicus। तो ये जितने भी ट्रेजिक रोल थे वो रिचर्ड बर्बेज परफॉर्म करता था, ये नेट में क्वेश्चन आया था। और जितने भी कॉमिक रोल्स थे दे वर परफॉर्म्ड बाय टू एक्टर, विलियम कैम्प एंड रॉबर्ट आर्मिन, ये आपको याद रखना है। तो विलियम कैम्प एंड रॉबर्ट आर्मिन, they used to perform comic roles of William Shakespeare's play, and the tragic roles of William Shakespeare play were performed by Richard Burbage। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शेक्सपियर की कंपनी थी। Now Admiral's Men, this was the company who used to perform Christopher Marlowe's play। ये क्रिस्टोफर मार्लोव के प्ले को परफॉर्म करती थी। ये मेन प्रतिद्वंदी थी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन की। इनिशियली इस कंपनी को क्या कहा जाता था, लॉर्ड हॉवर्ड्स मैन कहा जाता था, एंड दिस कंपनी यूज्ड टू परफॉर्म क्रिस्टोफर मार्लोव्स प्ले। और इसमें जो मेन एक्टर था वो एडवर्ड एलिन था, ये आपको याद रखना है, एडवर्ड एलिन। he used to perform the central role of Christopher Marlowe's play, and the next company was Queen's Men। और इसे क्वींस मैन क्यों कहते हैं, बिकॉज क्वीन एलिजाबेथ और उसका एक सलाहकार था जिसका नाम था नोबेल फ्रांसिस वॉलसिंगम,
तो ये इसके पैटर्न थे, इस कंपनी के प्लेयर को पैसे देते थे, ठीक है, एंड दे यूज टू परफॉर्म द प्लेज ऑफ अदर यूनिवर्सिटी विट्स सच एज जॉन लिली, थॉमस नैश, थॉमस किड एंड रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील। तो इनके जो प्ले थे वो ये परफॉर्म करते थे। So that's all from Elizabethan age. So I think you are able to understand Elizabethan age. I have discussed Elizabethan age in great detail, covering each and every important point.